Hey guys, welcome back to my channel Brothers Plan, and today we will understand some of the important topic that is related to our science from chapter electricity of class 10th science. Now we will start today from chapter electricity, the very first topic, that is our electric current. So from today we will start electric current. So first of all we will give the topic, that is our electric current means electric current. What we will understand from electric current? Electric current means the flow of electron through a metallic wire or through a conductor is known as electric current. So we will write simply as a definition: the flow of electron through a metallic wire or it may be conductor is known as electric current. Means simply we can say that the flow of electron through an electric circuit is known as electric current. The flow of electron through a conductor is known as electric current. Now the we all know that, or we will understand कि some of the topic that is our SI, the SI unit of electric current is ampere. So we will write on here SI unit of electric current is ampere. Andre Ampere had discovered the electric current. So we could understand that electric current, the SI unit of electric current is ampere. Here we can say that SI unit हम लोग क्यों यूज करते हैं? SI unit हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जनरली हमारा यूज होता है SI यूनिट के लिए. जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहला हमारा प्रायोरिटी यह रहेगा कि हमें जो भी यूनिट में दिया होगा, किसी भी यूनिट में गिवन है, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर किसी भी यूनिट में गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके SI जिसमें हमें ले जाना है उसके SI यूनिट में पहले कन्वर्ट करना होगा, तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. तो इसका जैसे कि होता है, जैसे कि हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को आ गया कहीं पर कि I इज इक्वल टू और इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होना है, तो हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि इलेक्ट्रिक I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ये हमारा बेसिक फार्मूला है टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक करंट. सो I मीन्स वेयर I denotes electric current, Q denotes electric charge. Now this topic electric charge we have discussed in the very first video that you could understand from there. Now T denotes time. Whatever it would be time, you would mention the time according to the given measurements, quantity, and whatever it will be. So we could also represent, we also know that how we represent it. The representation of this electric current is that we represent is representation. हमें पहले जानना होगा, हम किसी कहीं पर अगर लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होना है, इलेक्ट्रिक करंट हमें लिखना है, तो हम कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है? तो रिप्रेजेंटेशन हम इसका सिंपली जानेंगे, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड बाय I. इसको सिंपली हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. तो हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट यहीं पर खत्म होता है. उसके बाद हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो हमारा डिस्कशन होगा 1 एम्पियर पे. एम्पियर होता है तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट हो गया. इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यह होगा कि एम्पियर पे हम लोग का डिस्कशन होगा इस सेकंड वीडियो में. थैंक यू यहाँ के लिए.